That is the function of a proviso. It is the substance and content of the enactment, not its form, which has to be considered, and that which is expressed to be a proviso may itself add to and not merely limit or qualify that which precedes it. Then I skip the next paragraph. I go down to the paragraph thereafter. In my view, that is not the case here, and as Lord Herschel pointed out in the same case, of course a proviso may be used to guide you in the selection of one or other of two possible constructions of the words to be found in the enactment, and show when there is doubt about its scope, when it may reasonably admit of doubt as to its having the scope or that which is the proper view to take of it. My lords, that is precisely the method of construction which in my view is applicable in the present case. I will add that the words beginning, provided that, are in my opinion additional and explanatory words necessary for the purpose of giving a more definite meaning to the preceding words, that is, of removing doubt as to its scope, and they might easily have been incorporated in the earlier part of the section at the risk of making it rather more cumbrous than it is. We are not dealing here with a true proviso, or at any rate not with such a proviso as this House was considering in the case cited. It cannot, I think, be disputed that in construing a section of an Act of Parliament, it is constantly necessary to explain the meaning of the words by an examination of the purport and effect of other sections in the same Act. This principle is equally applicable in the case of different parts of a single section, and nonetheless that the latter part is introduced by the words provided that or like words. There can, I think, be no doubt that the view expressed in Kent's commentaries on American law is correct. The true principle undoubtedly is that the sound interpretation and meaning of the statute on a view of the enacting clause, saving clause and proviso taken and construed together is to prevail. And this goes on in the next page, just one line at page 64, the third line from the top. But in the present case, not only is the first part of the section deficient in express definition, but the second part is complementary and necessary in order to ascertain the full intention of the legislature. Now let me pause here. Please pause. Now here. This is the Constitution of Pakistan. Yes. If I have to refer to the Privy Council to understand it, then it fails its purpose. ये लोगों के लिए बनाया गया आइन, ये लोगों के मुंतखब लोगों के लिए बनाया आइन. अब हमें प्रिवी काउंसिल की इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं है जब चीज वाज़ेह हो. अब आप इसमें नहीं, कोई आदमी नहीं समझ सकता है, इसीलिए आइन को कोई वक़्त आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आइन को आम किताब है, कोई भी पढ़ के उसको समझ सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें. अब आप जाएंगे नहीं, ये इंटरप्रिटेशन के लिए मुझे प्रिवी काउंसिल जाना होगा और फिर सिंध हाई कोर्ट के पास जाना होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अंग्रेज हमें समझा सकेगा कि हमने जो अपने लिए चीज किताब. जरा सुन दे, आप सुन ही नहीं रहे हैं, बार बार इशारे कर रहे हैं. अब आप हमने आपको बिल्कुल सुन लिया ना, आराम से, बीच में बोला मैं कोई, तो जरा तहम्मुल से करें ना. मुझे नहीं तो ये जरा ये देखिए, आइन को कोई अहमियत है इसकी. कोई आदमी आता है, कोई आ जाता है, बाहर से चल के आ जाता है, उस पर कहेंगे जी उसका मतलब ये, तो 4 जजेस को जमा करके उनको बिठा दें, उसका मतलब ये. भाई ये बात नहीं, जो आइन जो वाजे है उस पे अमल कर रहे हैं, हमें प्रिवी काउंसिल को छोड़ दीजिए. ठीक हो गया सर. अब आप देखिए, वी मूव अवे फ्रॉम द प्रिवी काउंसिल. जो सीधा साधा आइन है, सीधा साधा आइन ही मैं अर्ज कर रहा हूं. Therefore my submission is that when we read the two parts of clause D and E together, the main body and the proviso, what comes out is as follows. There is a constitutional principle, a salient feature. The democracy, representative form of government are integral to the Constitution. That is the principle. And the Constitution here has an envisaged outcome, which is a representative National Assembly. So we start with the principle of democracy and representative form of government and the legislature being representative, and the outcome is the National Assembly. In between, there is a machinery provision. The machinery provision in Article 51 is the principle of proportional representation. Now, partly, this is a method of election. It calls it, Article 51, 6D, says that this is how women will be elected to the reserved seats. This is how non-Muslims will be elected to the reserved seats. So this is an election which is going on, and a mechanism is given. Now, the question, therefore, is when we take this in its entirety, the two parts of both clauses D and E, we are to uphold the democratic principle, the representative
representativeness principle, which is at the heart of the Constitution, and ensure that the National Assembly that emerges on account of these two methods of election, the general election for the direct election for the general seats and the proportional representation election for the reserved seats, both reflect the will of the people. That is what my Lord Justice Manilla has been alluding to, that what is at play here is the will of the people. Now, this is the higher principle that this... अगर विल ऑफ द पीपल का आप आर्ग्यूमेंट करें तो फिर तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना ही नहीं चाहिए, सीधा साधा उनको कैंडिडेट बना दें। हमें ये क्या बात है विल ऑफ द पीपल? आप ये लफ्ज तो जुमले तो अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जो सिस्टम दिया हुआ आइन में, देखिए वो बार बार मैं उसी में आ रहा हूँ। मुझे अर्ज करने दें, एन इलेक्शन इज रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल। या तो कोई पॉइंट्स लिखें तो मैं लिखूं, आप अगर फलसफे की बात कर रहे हैं वो मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसलिए आपको बार बार आइन पे ला रहा हूं कि आइन पे फोकस आइन ही मैं पढ़ रहा हूं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इस क्लॉज को जब आप पढ़ेंगे 51(6)(d को पढ़ लिया, विल ऑफ द पीपल को लेते हैं विल ऑफ द पीपल। अब ये बताएं, जब विल ऑफ द पीपल ने तो वोट दिया इंडिपेंडेंट, उनने पीटीआई के कैंडिडेट्स को दिया, जी ठीक। अब वो हु डिसाइडेड दैट दे विल जॉइन? इज देयर अ मैकेनिज्म, इज इट अलाउड इन योर पार्टी? वाज एनी प्रोसेस फॉलोड बाय द पार्टी टू से ओके? क्योंकि देखें, जब आप वोट लेने गए उस वोटर को क्या ये था कि आपने ज्वाइन करना है एसईसी? जी मैं अर्ज करूं सर। अब आप एक राजा साहब जी सच कह दीजिएगा, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सच कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट वो माय लॉर्ड आई डोंट नो व्हाई एवरीवन इज सो हेजिटेंट टू सप्रेस द ट्रूथ। सर हुआ यूं कि जब हमें डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि हम इंडिपेंडेंट हैं, so our symbols were those of independence. There are two lists of symbols. One were symbols for आपकी एक पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है ना जी? जी। उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर होगा कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो ये पार्टी डिसीजन ले जा सकती है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन आप यू कांट ये नहीं कह सकते कि जी देयर वर 3 सीनियर लॉयर्स हु गॉट टुगेदर एंड दे डिसाइडेड। इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, दे हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप हमें So this is a very unexpected situation. Nobody envisaged a situation like this. But anyway, it had emerged. इसके रिपरकशंस भी आप अपने ज़हन में You didn't expect to win? No, we didn't expect to be independence, declared independence by the election you commission. didn't expect to win? No, of course we expected to win, but we did not. तो देखिए तो मेरे क्या मतलब आप आगे क्या कर रहे हैं? कर रहा हूं कि once या प्लीज मुझसे कुछ आप लिखवा लेना, ये तो हम जनरल गपशप my कर रहे हैं। your friends are writing. I assure my lord that your friends are writing a lot. मुझे अर्ज करने दें, I will encapsulate everything and Propositions बताइए ना, अगला बताइए। My proposition was सर राजा साहब, ये मैं जो मुझे जवाब देने दिए अफरीदी साहब का। जी अफरीदी साहब वाले में मैं ऐड करना चाह रहा था। दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच जस्ट क्रॉप्स अप इंसिडेंटली, इज दैट and it actually emanates from that question that this returned independent candidate is taking a decision on his own, while we're basing the entire argument on the right of vote of an electorate. So there are millions of people who voted for this gentleman to join PTI, and he in his discretion decides to join somebody else with a different manifesto, whatever. Is there this sounds very odd actually, that this one man has just decided to go some other But one has direction. not. The reality is, And he could have gone, maybe, suppose, what if he joins PMLN? Or what if he joins, he has a choice. मैं hypothetical सवाल पूछ रहा हूँ. What if he joined... let me respond both hypothetically and मतलब वो factually. जो फिर जो सारा हमारा आर्ग्यूमेंट है कि वोटर्स का राइट प्रोटेक्ट करें, जी। इलेक्टोरेट का राइट प्रोटेक्ट करें, हमने तो कैंडिडेट को वेस्ट कर दी सारी मैं पावर। अर्ज करूं। This is what the कैसे Constitution is. रिकंसाइल करते हैं? हालांकि ये पावर्स उनको हासिल इसलिए नहीं है कि अगर वो ऐसा करेंगे, एक पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी में जाएगा तो डिफेक्शन क्लॉज 63A में आएगा। वो बात की बात है उसको सर, अपने अभी किसी ने नहीं, गौर से अभी नहीं देखा। वो तो पार्टी हेड की डिस्क्रेशन होती है। मैं एक मिनट अर्ज करने दें मुझे। ये राजा साहब, ये बड़ा डेंजरस होगा जी। आइंदा के लिए। जी। यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कोर्ट टू स्टैम्प समथिंग कि आइंदा के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल दिए जाए। नहीं, बिल्कुल ना कि खोले जाएं। वोट वो किसी एक नाम पे लें। नाउ आइदर यू कंप्लीटली टेल द ट्रूथ। मुझे अर्ज करने यहाँ देना। पे फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से लेके आज तक सर, मुझे- पीपल हैव बीन रॉब्ड।
Sir, So either say that people were robbed in Sir, मैं 8 February. बात नहीं करना चाहता which will attract the comment that this is politics. I want to remain purely in constitutional law and respond to my Lord Justice Afridi's question. Sir, I would submit that the Constitution envisages that independents will join or may join political parties, and therefore when a person declared an independent candidate goes to the electorate seeking votes, the electorate knows that this person upon being elected may or will join some political party. So they trust that person and they allow him that latitude, that authority to get their Here I'll votes. just ask one question. When they won as independents, what was preventing them from joining PTI? मैंने पहले अर्ज किया था No, please tell me again. If you've answered it already, I missed it. My lord, there were two reasons. One was that there was doubt that the election... Legal impediment कोई नहीं था. नहीं, Section 94 key explanation was still standing in front of us, and we were worried that we may be declared not a political party. Section 94 की explanation. Rule 94 key explanation. Rule 94 पे आप rely कर रहे हो. सर एक मिनट सर, और अगर उसको पढ़ ले आप तो सर एक मिनट सर, पढ़ ले उसको नहीं सर एक मिनट ठहर जाइए. वो रूल सर, पढ़ ले मेरी गुजारिश सिर्फ ये सुन लें 94 पढ़ ले कि योर लॉर्डशिप इनका मतलब है समझेंगे बेहतर अगर हम जी पढ़ जी लें ना पढ़ ले साथ साथ. जी, तो उसमें तो SIC भी आएगी पढ़ ले जरा इसमें आप voter को ultimately it is the will of the voter. So even for an independent candidate, the voter who has voted for the आप 94 independent पढ़ ले, has please. authorized that candidate. 94 पढ़ जी. ले आप रिलाई कर रहे हो Ji, for the purpose of this rule, the expression political party means a political party to which a symbol has been allocated by the commission. Now, there is a narrow reading. आपका कहना यह है कि आप इस रूल से जो कि लेजिस्लेशन भी नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसके डर से आपने सारा कुछ किया this और was there, पीटीआई को अबैंडन कर दिया. अबैंडन नहीं किया सर, हमने इसको चैलेंज किया, हमने हाई कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बट देन मैटर्स ओवरटुक अस, द इलेक्शन हैपेंड, वी हैड 3 days to जब decide. आपने ऐसी लूज बॉल खेलेंगे ना, हम सुप्रीम कोर्ट गए, बताइए कहाँ गए, ये ना कहिए तो आप नहीं गए सुप्रीम कोर्ट. इसको रिजेक्ट होगी ना, हमारी वापस हो गई थी. अभी नहीं मैंने वापस हो गई तो वो एक दफ्तर में किसी ने बैठे, आपने अपील नहीं फाइल की. सर उसकी सर्कमस्टेंसेस नहीं, अब ये देखें ना, कम से कम लेट्स फॉर अ लॉयर टू यूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी तो हम कर सकते हैं क्या आपको किसी ने ना. ये मना- कहने सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ये बिल्कुल नहीं किया सुप्रीम यहाँ कोर्ट. पे आपको किसी ने मना Office of the Supreme नहीं, Court किसी returned. ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सरसाइज जुडिशियल पावर. राजा साहब किसी ने आपको किसी You ने don't have to agree, that's a fact. So the circumstances were such that अभी सर्कमस्टेंसेस पे आ जाते हैं पर कभी. ये जरूरी है to understand the circumstances. क्या सर्कमस्टांसेस है कि आप सुप्रीम कोर्ट के गेट में तो एंटर हो सकते थे सर। एक मिनट सुन ले रजिस्ट्रार तक जा सकते थे, लेकिन उस रजिस्ट्रार के ऑर्डर के खिलाफ जो लॉ ने रूल्स ने रेमेडी प्रोवाइड की, अपील की, आज भी आपको किसी ने मना नहीं किया. सर इसकी वजह से हम डिनाई कर देंगे द राइट टू रिजर्व सीट्स टू करोड्स ऑफ वोटर्स हु हैव अगर आप वोटेड. लेना नहीं चाहेंगे हम नहीं कैसे सर, लेंगे? क्यों नहीं लेना चाहेंगे? अब आए- दैट राइट हैज क्रिस्टलाइज्ड. अगर आप लोग गलत तशरीह करें खुद, तशरीह गलत नहीं की हमने. हम क्या कर सकते हैं? सर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दरवाजा खटखटाया. इलेक्शन कमीशन इज अ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. फिर मान लीजिए उनका फैसला अगर आप उससे खुश हैं. Therefore, उन्होंने कहा कि आप इंडिपेंडेंट हो. We had no choice then but to contest the election as independent. We had different वो तो मैं symbols. मान ली बात. ठीक हो गया. जब जीतने के, मैंने आपका सवाल ये नहीं था कि आपके कैसे कंटेस्ट किया, मैंने कहा आप जीत गए, ठीक आप है. जीत गए. अब सवाल आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं. सवाल ये था कि अब जो जीते हुए कैंडिडेट से अगर वो उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था सामने जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था पार्लियामेंट में, ठीक है. एक और पार्टी थी, उसका नाम था पाकिस्तान तहरीक पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. ये दो पॉलिटिकल दोनों सर सुन, अब आप भी अब मैंने सवाल खत्म नहीं किया ना. ये दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है. अगर उनकी नहीं थी कोई पोजीशन पार्लियामेंट में, इनकी भी कोई पोजीशन पार्लियामेंट में नहीं थी, दोनों एट पार थे. चले हम ये भी मान लेते हैं दोनों एक पार थे. तो आपने इंतखाब पीटीआई का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा केस हो सकता था अगर आप पीटीआई का इंतखाब कर रहे हैं. और ये बार बार आपको कह रहा हूँ, कल ही अगर इनका मूड इनका चेंज हो गया, जो लोग कंट्रोल करते हैं सुन्नी इंतजाम काउंसिल में, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे. तो ये अच्छी, आप इधर जाना चाहे तो उधर चले जाते. तो आपने कहा क्योंकि एक रूल बनाया था किसी ने जो कि जिसकी कोई लीगल वो नहीं है, पार्लियामेंट नहीं बनाता है रूल, सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, उसमें एक एक्सप्लेनेशन आ गया था, उसकी वजह से मैंने कहा. जी. And it is the law, and the election commission had upheld it, and the high court had refused to interfere with it, and we had come to the I think the Supreme reason Court, the why- registrar I had think the returned reason it. was that the Supreme Court judgment
denying the election symbol was being interpreted by the, So, Manoj, मुझे by अर्ज the करने दे, मैं अर्ज election commission in a करूं. certain बिल्कुल way. quite, so Manoj. That's the context. That's the whole basis on which the matter proceeded. But you see, Mr. Salman Raja, we are drifting from your submission that the proviso is an Planetary and is a sort of independent provision and not a true proviso. You see, the way I look at it is that this whole concept of reserved seats for women and minorities is for a certain purpose. But the reason why the constitutional principle is laid down that it has to be only proportional is precisely because the political parties have entered the electoral fray and the electorate has returned them. That balance should not be disturbed. That is the reason why the seats, the Constitution emphasizes in paragraphs D and E that the reserved seats can only be proportionate. However, it creates an exception vis-a-vis the independents joining within that period, right? Now, if that is an exception to the basic principle, and the basis of the principle is the will of the people as expressed in favor of each political party, right? So then it seems to me that on a fair reading of it, the proviso is a proviso and not a पहले substantive. उस तरह भी ले लें अगर, if I may. Now, it seems to me your position is get me into parliament. No, my lord, no. I don't care My position is- whether I get in as PTI or as SIC. My position is simply this. That seems to be your... No, my position ultimately is this. The bottom line as far as you are Yes, well, concerned. because now they're alter egos. The SIC and the PTI are now alter egos. That's the tracing. That's what you're saying. That's the tracing my lord Mr. was Salman, referring this is a to. very important Yes, point. yes. The proportional representation is ensuring that people who have won the seats in the system the balance would not be affected. Yes. That's why you cannot introduce a third party which never jumped into the election process. देखें ना, समझ नहीं चाह रहे हैं जी, उसी जी, को। जी, जी। और बल्कि उसका जवाब भी आप दे दें कि suppose SIC is not a political party, could you just answer this question for us, which is bothering, speaking for myself? My understanding of proportional representation is that it will only go to political parties, they'll get the share which they've earned or what they have won. What happens to the remaining seats? What do you say on that? Before you answer that, if I may follow up with what my learned colleague is asking, that because question I've asked, and I intend to ask the other side also, can form defeat substance? Yes, Manoj. It cannot. This is, to me, one of the questions that lies at the heart of the very unusual circumstances of this particular general election. Absolutely. Can form defeat substance? May I respond now? Now, add these two questions and You don't want to, you following, at least you are following Mr. Faisal Siddiqui in one thing. You don't want to respond to my question. No, I do, my lord. So can you, I'll repeat it for you. And please don't interrupt. When the election took place and independents, PTI members, whoever, whatever you want to call them, they got elected. There were two goals before them, or maybe there were others also. There was a subsisting political party, legally subsisting political party called PTI. There was another subsisting political party which people knew what it was about. There was another subsisting political party, Sunniyat Council, which probably nobody knew about it. I didn't even know this name till later. Maybe others were better informed and they knew about it. Why, when both these political parties were equally placed, if we assume that they, so then why didn't you elect to go to PTI? Why did you elect to go? Please answer the question. I will. And I've tried to answer it before. It was the reality of the situation in which we felt that the future of PTI at that point in time was uncertain. Reality of the situation is not a constitutional or legal आपने हमसे answer. पूछा ना, why did you make this decision? So legal jawab. Legal ये था कि we felt that this is equally good. Our position was, and that is what I'm arguing. You're using word opposition, felt, No, my lord, ask reality. me a question. Why don't you say ayn, Our law? constitutional understanding was that there is no impediment to our joining the SIC, and my lords will decide that question. Whether it was
party decision or it was decision of the individuals? No, it was the party decision, sir. Is there Why any- would 87 people join the same SIC on one day? It was the party's decision, and the party felt Is there on a reading of the Constitution. any minutes of meeting of the party? Who decided it? Whether it's cabinet decided or general council decided? Who decided? और that Faisal साहब will be able to provide and PTI will be able to provide. आपने सवाल पूछा है, I will try and get the document. But what is clear is that 87 elected members who had been declared independent. आगे बढ़े चले सर, मुझे अर्ज करने वो आप दीजिए। जवाब नहीं दे रहे हैं, आगे मैंने दिया बढ़े जवाब मेरा ये है कि we felt on our reading of I'm using the word we felt on our reading of the Constitution, or let me rephrase it, our reading of the Constitution was that there is no impediment to the 87 members declared independent joining the Declared SIC. independent by whom? was there By the impediment Election was there Commission. impediment to join See, PTI this No, is the Mr. thing. Salman, ये You जो are explanation है, always Mr. a member Salman, of ये the- Rule 94 of की CTI. explanation आप You were देखिए never क्या है? independent. Rule But 94 always की explanation. PTI. You see, मैं एक मिनट your form is, if I understand it correctly, always said you are PTI. yes. So your question of joining PTI, speaking for myself, didn't arise. so my ये राजा Election साहब Commission was एक pushing you in this direction. Raja Saab, as I quite so not the understand, Election Commission was not accepting us as Raja to see what Saab, as they I say on this. understand, you have placed it on record, 2nd February 2024, Election Commission's order Yes. declared all of you as independents, and that, speaking for myself, they grossly misinterpreted the judgment of this court, I agree. and I bow. entirely on that basis, they declared you independent. Why should the people be prejudiced? Yes. Because a wrong interpretation so. of this court. Quite It so. has to be corrected. Of the So Election you Commission. have to take a clear stance. yes, that is what I am submitting. Or another What have word. been a more important issue than Mr. this one? Salman, Or in other terms words, of whether the Election Commission No, no, I'm sorry. In terms of explanation, if I may take that in question. terms of explanation to Rule 94, Yes, ma'am. how could you join other party when you had no symbol? And number two, in the presence of this explanation, this case is required to be heard along with that review petition. So that whole scenario should come before this court. That What is for my happened? lords to decide. So my submission is that since we had been declared No, independent. whether my question is whether the Election Commission has got any power, any authority under the Election Act or rules to declare somebody independent or a party affiliated candidate. ठीक हो गया? उनका इख्तियार है? They took this नहीं, position. एक मिनट पहले सवाल कीजिए हाँ या ना में उनका Yes, they said Rule 94 empowers them to do that. इतना आपसे पूछ रहे हैं कि उनके पास कानून में कोई इख्तियार है कि एक शख्स कहे कि मैं पार्टी एफिलेटेड हूँ और वो कहे नहीं आप इंडिपेंडेंट हो, क्या ये इख्तियार है उनके पास? हमारी नजर में तो गलत था, इसीलिए हम हाई कोर्ट गए। तो आपको चैलेंज करना चाहिए सर हम गए, हाई कोर्ट गए, इलेक्शन छोड़ कमीशन कर गए, रिपीट ना करें, आप ठीक गए हो गया तो सर। गए। लेकिन अब आपने ये देखना है कि देयर इज अ सिचुएशन इन व्हिच द इलेक्शन कमीशन, व्हिच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी आप गए थे आप गए थे हाई कोर्ट जी हाई कोर्ट ही भी तो हमने ये तो ये गए थे नहीं हम गए थे रूल 94 को चैलेंज करने। We नहीं, challenged ये the- आप ये जो इम्प्यून जजमेंट में आप पिटिशनर थे नहीं सर, I went separately challenging this explanation to Rule 94. वही पुरानी बात कर जी, रहे वही हैं वो कर लॉ रहे हैं। हाई कोर्ट वाली जी, जी, फिर वही वो बात, जी, आपने जी। ऑफिस ऑब्जेक्शन मान जी, लिया वही बात। So my submission नहीं तो is- मैं आपको दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ, आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने चैलेंज किया, आपने चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में? इलेक्शन हाँ या ना? जी इलेक्शन कमीशन का फैसला आया 7 फरवरी को हमारे पास। किया या नहीं किया सर? नहीं किया। बस थैंक यू, आगे बढ़ और हम आए, आप आगे बढ़े, कोई बात ठीक है सर, और हम आए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ